Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani here from SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. Great. Ankit ji is here. Ankit ji is saying visible. So we'll just wait for a couple of minutes. I see that people are joining in, and I think once people join in, I think we should be good to go with the session. Arvind ji है यहाँ पे, राकेश जी भी है. Great. Salil ji, Eknath ji is here. Sachin ji is here as well. Okay, super. Visible and clear. Dr. CKG is saying, okay, superb. So, how many of you all were there for the part one of chart patterns? So, जो part one था chart patterns का, वो हमने I think 2 हफ्ते पहले किया था. Great, Lakshman ji is here as well. Datta ji is here. So 2 weeks earlier we had done the part one of chart patterns. तो वहाँ पे हमने 9 patterns देखे थे in total. So some of the patterns that we covered in the first part was your double top pattern, then you had double bottom pattern, फिर एक triple top pattern था, फिर एक triple bottom pattern था. Then we covered rectangle patterns. Then we covered 3 types of triangles, like your symmetrical triangle, ascending triangle, descending triangle. And then we ended the session with broadening patterns, where the upper line goes up, the downward line goes down, and you have a broadening patterns there. In case अगर आपने miss भी किया हो, तो you don't have to worry about it. आप हमारे SBI Securities के YouTube चैनल में जाके जो live वाला टैब है, you can just scroll back and you can see chart patterns 1. So probably after this session आप वो जाके revisit कर सकते हो. Uh, yeah, it is there on the SBI Securities YouTube channel, Arvind ji. So if you go to SBI Securities YouTube channel, वहाँ पे live का एक tab होगा. So once you go to that live videos, उसमें if you just scroll back and see, you will find chart patterns part 1. Nevertheless, you can look at that part later. It is anyway ज़्यादा connection नहीं है उसका और इसका. Anyway, it's just a continuation of that. So there were total of 20 patterns. तो हमने 10 पैटर्न वो वाले वेबिनार में किए थे, तो आज के वेबिनार में भी हम 10 पैटर्न सीखेंगे. So that is how it is going to be. So anyway, it's जो भी discussion होगा patterns का, that is going to be in depth ही होगा, because यहाँ पे बहुत सारे examples भी हैं, and then towards the end एक quiz भी हम लोग रखेंगे जहाँ पे मैं आपके सामने charts रखूंगा, and then you will have to guess whether you are able to identify the pattern or not. So we did that in the first part as well. So we are going to do that in this part as well. Okay. So let us start off with the session. So before we start, how many of you all here have used or use chart patterns here? कितने लोग actively chart patterns को अपने trading में use करते हैं? So I'll keep switching between English and Hindi, Meena ji. So that because there are some people who will prefer English, there are some people who prefer Hindi. So I'll keep a mix of Hindi and English both. So that everyone gets to understand that. Federal, see for that, Aditya ji, for any stock specific queries, what we'll do is आज का जो टॉपिक है वो खत्म करने के बाद टुवर्ड्स द एंड अगर we'll have some time and then I'll try to answer your queries. ठीक है आदित्य, बिकॉज आज जो important है that is about chart patterns. So we'll first study about chart patterns and then I'll take your queries towards the end. And interactive होगा, so there'll be a lot of questions that I'll ask, and we'll keep it interactive, ताकि ऐसा ना हो कि इट इज लाइक वन वे थिंग जहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पूरा 1 घंटा और फिर बाद में आप क्वेश्चंस पूछ सके. ठीक है. Arvind ji saying sometimes use chart patterns. Okay, no problem. So today we'll learn about around 9 patterns, 9 to 10 patterns हम लोग अभी सीखेंगे. And then after the session, what you can do is you can go and look at the chart patterns part 1 as well. So you will get an idea of the broad important 18 to 20 chart patterns that you can use here. Okay, so can we start off with today's session? Gopal ji is saying yes. Okay, great.
So how many patterns are we are going to see today? So we are going to look at diamond patterns. कि diamond pattern क्या होता है? uh, then we are going to look at rounding chart patterns. जैसे आपने देखा होगा, there is rounding tops, rounding bottoms. How are they formed? We are going to see that. Then we are going to look at wedge patterns. Then we are going to look at cup and handle patterns. Then head and shoulder. I'm pretty sure everyone must be aware of this pattern, head and shoulder pattern. एक्चुअली जब निफ्टी का जो टॉप बना था सितंबर में, उस टाइम में काफी लोग का ये ऑब्जर्वेशन था कि निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और शायद एक डाउनफॉल शुरू हो सकता है. सो वो भी एग्जांपल है, हम लोग देखेंगे वहां पे. And then we are going to look at flag and pennant patterns as well. So these are the patterns that we are going to see. Where we can plot a chart pattern. So there are websites available. So TradingView is one of the website. तो वहाँ पे जाके आप there are some tools available. Trend lines है, horizontal lines है, arrows है. So you can look at the price chart और वो tools रख के आप chart patterns को plot कर सकते हैं. ठीक है. So let us start off with the first pattern for the day. So how many of you all are aware of a diamond pattern? तो जो सबसे पहला पैटर्न जो हम लोग सीखेंगे वो होगा एक डायमंड पैटर्न. सो व्हाट हैपेंस इन अ डायमंड पैटर्न? सो दो तरह के पैटर्न्स है. हाँ गोपाल जी, हम लोग वो भी देखेंगे, हेड एंड शोल्डर भी है. सो देयर आर 9 पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू सी. सो वी विल लुक एट ऑल द पैटर्न स्टेप बाय स्टेप. तो दो तरह के पैटर्न्स है. एक होता है आपका डायमंड टॉप पैटर्न और एक होता है आपका डायमंड बॉटम पैटर्न. सो डायमंड टॉप इस बेसिकली, जब भी आप ये पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे यूपीएल का जो स्टॉक है उसका 1 मंथ चार्ट है. सो दीज आर ऑल हिस्टोरिकल चार्ट्स जहाँ पे ये पैटर्न्स बने हुए. सो एक एग्जांपल के तौर से हम लोग समझेंगे ताकि आपको भी एकदम क्लैरिटी से समझ में आए. नाउ इफ यू सी डायमंड टॉप पैटर्न्स, ये कब अकर होता है, कब उसको हमें देखना होता है? जब प्राइस यूजुअली एक अपवर्ड मूवमेंट के बाद टुवर्ड्स ये जो क्लाइमैक्स होता है अपवर्ड मूवमेंट के बाद, उसका यूजुअली एट द टॉप, जैसे कि नाम है डायमंड टॉप, तो ये जो पैटर्न है यूजुअली आपको टॉप्स में दिखता है. और जो डायमंड बॉटम्स है दैट आर यूजुअली टू बी सीन एट द बॉटम ऑफ, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद एक ये जो पैटर्न बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ डायमंड बॉटम पैटर्न. ठीक है. नाउ हाउ डज दिस डायमंड पैटर्न लुक लाइक? अगर आप डायमंड पैटर्न देखोगे, जैसे हमने ब्रॉडनिंग पैटर्न्स देखा था, तो इसमें क्या होता है? So diamond pattern is a combination of a broadening pattern as well as a symmetrical triangle. अब broadening patterns में क्या होता है? यहाँ पे जो एक लाइन है, upward rising line है, मतलब the price keeps making a higher high, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है. तो अगर आप ये डायमंड पैटर्न को आपको दो हिस्से में ब्रेक करना है, एक है आपका ब्रॉडनिंग पैटर्न जहां पे यू विल हैव एन अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन एंड देन यू हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन योर. और जो दूसरा पार्ट है, अगर आप ये राइट साइड में देख रहे हो, वो है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल. मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है? ब्रॉडनिंग पैटर्न्स में एक लाइन ऊपर जाता है, एक लाइन नीचे जाता है. सो बोथ द लाइंस दे डाइवर्ज, मतलब ये दोनों मर्ज नहीं होते, डाइवर्ज होते, दोनों अलग दिशा में जाते हैं. मेरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है? दोनों लाइंस एक दूसरे को आके कन्वर्ज करते हैं, ये आके मिलते हैं एक पॉइंट पर. तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में इट्स अ ब्रॉडनिंग पैटर्न, राइट हैंड साइड में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है. यहाँ पे दोनों जो लाइंस है वो डाइवर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे जो दो लाइंस है वो कन्वर्ज हो रहा है. अगर आप दोनों को मिलाओगे, ब्रॉडनिंग पैटर्न और सिमेट्रिकल पैटर्न, तो वो आपका बन के आएगा डायमंड पैटर्न्स. गोपाल जी, आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, वेदर अगर आप 1 डे चार्ट हो या 1 मंथ चार्ट हो या 1 आवर चार्ट हो, 4 आवर्स चार्ट हो, द पैटर्न इज द सेम एंड यू कैन यूज इट अक्रॉस एनी टाइम फ्रेम दैट यू वांट टू. ठीक है. So basically diamond patterns, it's a combination of symmetrical triangle as well as your broadening pattern here. क्योंकि अगर डायमंड टॉप है तो हमें एक अप ट्रेंड के बाद जो टॉप है वहां पे आपको डायमंड टॉप दिखेगा. वही अगर डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको ये डायमंड पैटर्न दिखा तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बॉटम पैटर्न. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न, वन इज डायमंड टॉप एंड वन इज डायमंड बॉटम. अभी हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो यूपीएल का 1 मंथ चार्ट है. द प्राइस वाज इन एन अप ट्रेंड. यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस ना एक कंसोलिडेट किया एक रेंज पे. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अपवर्ड राइजिंग था, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग था. सो दिस वाज योर ब्रॉडनिंग पार्ट. फिर यहाँ पे क्या हो गया? प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया. सो द अपवर्ड लाइन स्टार्टेड टू फॉल एंड द डाउनवर्ड लाइन स्टार्टेड टू राइज. अगर आप ये पूरा हिस्सा देखोगे, दिस इज बेसिकली, दिस पार्ट इज योर ब्रॉडनिंग पार्ट, दिस पार्ट इज योर सिमेट्रिकल पार्ट. अगर आप ये दोनों को कंबाइन करोगे, ये आपका होता है डायमंड पैटर्न. और जैसे ये ब्रेकआउट होता है, नाउ आइडियली फर्स्ट इज आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न.
आपको एंट्री कब लेना है, जब ये डायमंड पैटर्न से ब्रेकआउट मिलता है। तो यहाँ पे या तो आप इसको ब्रेक डाउन बोल सकते हो कि अगर ये जो पैटर्न है उसके नीचे की तरफ टूटा तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं, अगर ऊपर की तरफ टूटा तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। अब क्योंकि ये टॉप पे गया है, ये जो बॉटम, ये जो पैटर्न जो मिला है हमें टॉप पे मिला है, और इसका अगर आप देखोगे ब्रेकआउट इज ऑन द डाउन साइड। सो जब ये पैटर्न से ब्रेकआउट होके बाहर आता है और नीचे क्लोज होता है, दैट इज वेयर योर एंट्री वुड बी। क्योंकि ये नीचे, अभी आपको देखना है कि ये कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ये अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है या डाउन डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो द ब्रेकआउट इज क्लियरली ऑन द डाउन साइड। तो जिस दिशा में ब्रेकआउट हो रही है उस दिशा में आपको ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल, और कभी भी डायमंड पैटर्न या कोई भी चार्ट पैटर्न जब बनता है तब आपको ट्रेड ले लेना, यू हैव टू ऑलवेज वेट फॉर अ ब्रेकआउट, कि जब ये पैटर्न से ब्रेकआउट होता है दैट इज वेयर आपका एंट्री ट्रिगर होता है। सो दिस इज वेयर योर ब्रेकआउट इज, सो दिस इज वेयर योर सेल ट्रेड वुड बी। और जैसे आप यहाँ पे एक सेल ट्रेड लोगे, जस्ट ये जो इसका जो प्रीवियस हाई है या ये जो वाला जो हाई है, एक हाई पे आप इसका एक स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया विदाउट स्टॉप लॉस, आपको ट्रेड लेना है। जैसे ये आपको मान लो अगर आपने यहाँ पे इस लेवल पर आपने सेल किया तो जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम आपका स्टॉप लॉस क्लोज हो जाएगा, मे बी समवेयर अराउंड दिस हाई और दिस हाई इज वेयर यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस। और ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये जो हाई है और ये जो लो है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को आपको मेजर करके ब्रेकआउट लेवल से सबट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका आ जाएगा आपका मिनिमम टारगेट। Is that part clear, guys? Is the diamond pattern clear? If you can give me a heads up in the chat box. Very simple. So एक होता है आपका broadening pattern, एक होता है आपका symmetrical pattern. तो जब ये दोनों combine होता है, that is how you get a diamond pattern. अगर ये टॉप में देखा जाए तो इसको डायमंड टॉप बोलते हैं, और ये बॉटम में देखा जाए तो वी कॉल इट एज अ डायमंड बॉटम पैटर्न। देन एंट्री कब लेना, यू हैव टू एंटर इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। अगर ये नीचे ब्रेकआउट अगर नीचे आता है तो यू हैव टू गो फॉर अ सेल ट्रेड, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है यू हैव टू गो फॉर अ बाय ट्रेड। नाउ यूजुअली क्योंकि टॉप में मिला है और ब्रेकआउट नीचे आया है, सो दिस इज वेयर योर सेल ट्रेड विल ट्रिगर। Retest, we'll come to the retest part, Raviji, but I hope this diamond pattern was clear. So this was pattern number one. Now let's go to pattern number two. Now, how many of you all have heard about rising wedge pattern, guys? कितने लोग ने rising wedge pattern के बारे में सुना हुआ है? If you all can let me know in the chat box. So we just got done with the diamond pattern. Now we are so there are two types of wedge pattern. So wedge is WEDGE. अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न्स मालूम है, जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न हो या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो या जैसे आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो, इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज पैटर्न्स, और देयर आर टू अनदर टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, एक होता है आपका राइजिंग वेज और एक होता है आपका फॉलिंग वेज। नाउ वेज पैटर्न्स एक बेसिकली एक, अब जो प्राइस है ना वो एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट अ राइजिंग वेज पैटर्न। Now, what is a wedge pattern? A wedge pattern is a triangle pattern with both the trend lines heading in the same direction. अब हम लोग एक एग्जांपल के इससे समझते हैं। तो यहाँ पे एक आईसीआईसीआई बैंक का हिस्टोरिकल चार्ट है। सो हियर आई हैव द वीकली चार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। नाउ आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो गया, आप देख रहे हो ये जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में है यहाँ पे। Now, can you see there are two types of lines that I have drawn here? So there is one high, the price has come down and it has gone up again. Now, can you see that ये जो second high है, that is higher than my first high? तो अगर मैं ये जो दो highs को connect करता हूँ, can I say मेरे को एक upward rising trend line मिलेगा? Let me know, guys, in the chat box. So here we can see ये जो second high है, that is higher than the first high. But if I connect these 2 points, can I say I will get an upward rising trend line? Can you all let me know, guys, in the chat box? So यहाँ पे the second high is higher than the first high, and when I connect these two highs, I get an upward rising trend line. Similarly, मैं नीचे की तरफ अगर मैं ये देखूं, अगर आप देख रहे हो this low is higher than the first low, अगर मैं ये दो लोस को, द सेकंड जो आपका डाउन ट्रेंड में जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, दैट इज आल्सो गोइंग अपवर्ड। तो आगे ना कहीं जाके ये दो लाइंस एक जगह मीट करेंगे। सो इफ आई लुक एट द फर्स्ट हाई
that is higher than the second high is higher than the first high. So यहाँ पे अगर मैं ये दो लाइंस को कनेक्ट करूं तो मुझे एक अपवर्ड राइजिंग लाइन मिलेगा. सेकेंडली मैं अगर ये दोनों लोस को भी कनेक्ट करूं, जैसे हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं दोनों लोस को कनेक्ट करके, सो आई कैन सी दैट द सेकेंड लो इज हायर देन द फर्स्ट लो. सो इफ आई कनेक्ट दीज टू लोज, ये जो लाइन है वो थोड़ा स्टीप है, इट इज मूविंग ऑन द अपसाइड. सो द लोअर, सो जैसे हमने देखा था बोथ द ट्रेंड लाइंस आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर आप ऊपर वाला ट्रेंड लाइन देखे ये भी ऊपर जा रहा है, नीचे वाला अगर ट्रेंड लाइन देखे ये भी एक हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है. So here you can see the prices are एक नैरो रेंज में यहाँ पे मूव. So here you can see the distance काफी थोड़ा बड़ा है. फिर वो जैसे जैसे आगे जाता है वो एक वेज पैटर्न से वो प्राइसेस है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. एंड दिस इज सीन आफ्टर एन अप ट्रेंड. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये वेज पैटर्न बनता है, सो आइडियली यू नीड 2 पॉइंट्स, 2 हाई होना चाहिए और 2 लो होना चाहिए. जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है थोड़ा स्टीप होना चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग, सो बोथ द लाइन शुड बी राइजिंग ट्रेजेक्टरी में होना चाहिए. एंड देन अगेन यू हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट. अगर यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होता है, दिस इज वेयर योर सेल एंट्री वुड बी. और जैसे आप ब्रेकआउट पे सेल, बिकॉज यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है, दिस इज वेयर यू विल हैव योर सेल एंट्री. और ये जो लाइन है जो आपका प्रीवियस स्विंग आई है, दैट इज वेयर योर स्टॉप लॉस इज. तो स्टॉप लॉस विल बी योर प्रीवियस स्विंग आई. यहाँ पे क्योंकि राइजिंग वेज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, सो दिस इज वेयर योर सेल एंट्री वुड बी. और इसका जो मिनिमम टारगेट है हम लोग कैसे देख सकते हैं, सो देयर इज अ मेजर्ड रूल. सो आपका ये जो डिस्टेंस है राइजिंग वेज का, द फर्स्ट हाई से लेके फर्स्ट लो का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको लेना है. और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, वहां से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो टेक दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस हाई एंड लो, वो वाला डिस्टेंस को आपको ये ब्रेकआउट लेवल से सब्ट्रैक्ट कर देना. सो दिस इज वेयर, अगर आपने यहाँ पे एंट्री दिया है, सो योर मिनिमम टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड दिस लेवल. Is this part clear, guys? Is the rising wedge part clear? If you all can give me a heads up in the chat box. So till now we have discussed two patterns. One is your rising wedge. So rising wedge में क्या होता है? Both the trend lines they move in the same direction. मतलब एक higher high और एक higher low के formation में. So this is your nothing but your higher high and this is nothing but your higher low. So whenever एक अप ट्रेंड के बाद आपको एक वेज पैटर्न मिलता है, फिर जो डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है, इन दैट डायरेक्शन इज वेयर यू नीड टू टेक द ट्रेड. इज द राइजिंग वेज पार्ट क्लियर, गाइस? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पैटर्न. इज द राइजिंग वेज पैटर्न क्लियर, गाइस? Binoy ji, Ankit ji, all the ones who are present here, so I can see a lot of people here who's attending the session. If this rising wedge pattern is clear, guys, you all can let me know in the chat box. I'll just wait for your confirmation before I go to the next pattern here. Great. Yuvraj ji is saying, Ankit ji is saying here as well. And don't worry, अगर आपको बाद में revisit करना है, आप बाद में भी revisit आप कर सकते हो. This is there on our YouTube channel as well. Okay. Now, जैसे हमने एक rising wedge pattern देखा था, now we are going to look at a declining wedge pattern. अभी rising wedge में क्या था? ऊपर वाला trend line भी ऊपर की तरफ और नीचे वाला trend line भी ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ पे. Now what will happen in a declining wedge is that now declining wedge, यह देखो अभी फॉर एग्जांपल एक एक्साइड इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट है यहाँ पे. इट्स एन हिस्टोरिकल चार्ट ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ राइजिंग वेज. राइजिंग वेज में दोनों लाइंस ऊपर की तरफ जा रहे थे. डिक्लाइनिंग वेज में क्या होता है, जो दोनों लाइंस है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी द प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड एंड दिस हाई इज लोअर देन द फर्स्ट हाई. तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्मेशन है and the जो upper trend line है that is downward sloping. So here you can see I have written it as falling upper bound. So we have a lower high and also here you can see this low is lower than the first low and the third low is even lower than the second low. So here आप देख रहे हो it's a lower high and a lower low formation and you see the both the lines are moving in a downward trajectory. और rising wedge में क्या था, both the lines were moving in an upward trajectory.
whereas a declining wedge में both the lines are moving in a downward trajectory here. So यहाँ पे आपका lower high है और यहाँ पे आपका lower low formation है. Now Bulkowski, so he's Thomas N. Bulkowski had covered that in part 1. तो उन्होंने उनका एक thepatternSite.com करके एक website है. So he has written a book on all the chart patterns. So if you want to know, if you want to have a mastery on chart patterns, I would suggest you go to that site or read books written by Thomas N. Bulkowski. तो उन्होंने काफी सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है. सो व्हाट ही सेज इज, अगर आपको एक वेज पैटर्न आइडेंटिफाई करना है तो मिनिमम आपके पास 5 पॉइंट्स होने चाहिए. सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 5 रिवर्सल पॉइंट्स. अब ये 5 रिवर्सल पॉइंट्स कैसे? सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. This is, for example, we'll consider this low as your first point, high as your second point, this low as your third point, this high as my fourth point, and this low as my fifth point. तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 2 पॉइंट है और नीचे की तरफ 3 पॉइंट है. सो दैट कंप्राइजेस ऑफ टोटल 5 पॉइंट्स. 5 रिवर्सल पॉइंट्स चाहिए फॉर बोथ राइजिंग वेज एज वेल एज योर डिक्लाइनिंग वेज, और यू कैन कॉल इट एज अ फॉलिंग वेज योर. और इसका हम लोग टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन दिस फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट, फर्स्ट लो पॉइंट एंड द फर्स्ट हाई रिवर्सल पॉइंट. इसका जो डिस्टेंस है, फिर आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट किस तरफ हुआ है. सो हियर वी कैन क्लियरली सी द ब्रेकआउट हैज हैपेंड ऑन द अपसाइड. तो जो पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ है, यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस लो एंड हाई. वो डिस्टेंस को हम लोग ये ब्रेकआउट में ऐड कर देंगे तो आपको एक मिनिमम टारगेट मिल जाएगा. नाउ I want to ask one question to everyone here. Now here we can clearly see यहाँ पे एक declining wedge pattern है और यहाँ पे हमें एक breakout मिला है. Now यहाँ पे दिख रहा है कि the breakout is on the upside. मतलब एक प्राइस गिर रहा था, एक डाउन ट्रेंड में था, एक declining wedge pattern था और फिर यहाँ पे हमें एक breakout मिला है. Now breakout के साथ हमें अगर एक extra confirmation ऐड करना है कि ये, अगर हमें जानना है कि ये breakout successful हो सकता है या नहीं, what is that one extra confirmation that we can look at along with the price breakout? If you all can let me know in the chat box. एक तो है आपका प्राइस से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया है, बट अगर मेरे को ब्रेकआउट के साथ इफ आई वांट टू ऐड वन मोर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, जिससे शायद मेरा कन्विक्शन थोड़ा 100% तो नहीं, बट शायद मैं थोड़ा मेरा कन्विक्शन बढ़ा सकूं कि हाँ ये शायद ये ब्रेकआउट हो सकता है ऑन द अपर साइड. What is that one extra confirmation that I can use along with the price here? And this goes with all the patterns. So any breakout that you see, whether वो broadening diamond top patterns में हो या broadening patterns में हो या triangle patterns में हो या rising wedge में हो, अगर breakout के साथ अगर आपको एक volume spike भी मिल रहा है, so all you have to do is you just have to go to indicators और आपको एक volume indicator add करना है. If you see there is a declining wedge pattern here and we have got a breakout, और breakout के साथ if there is a spike in the volumes, अगर आप देखोगे ये जो पीरियड था डिक्लाइनिंग वेज का, यू कैन सी हाउ द वॉल्यूम्स वर स्टैग्नेंट एंड लो हियर. मतलब एक तो वॉलेटिलिटी फेज भी एकदम कम था, अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वो भी कम है. बट द मोमेंट वी गॉट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस डिक्लाइनिंग वेज, दैट ब्रेकआउट वाज सपोर्टेड बाय अ वॉल्यूम स्पाइक एज वेल. सो अगर ब्रेकआउट पे अगर आपका शायद एक मे बी मान लो 60% कन्विक्शन है, वॉल्यूम के साथ शायद वो एक 75-80% कन्विक्शन हो जाएगा. ऐसा नहीं कि 100% कन्विक्शन आपको हर टाइम मिलेगा कि ये ब्रेक, यहाँ पे तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल भी हो. It's not necessary that your breakout will be successful all the time, but just to improve your chances of winning, you have to look at multiple confirmations. So along with price, you should always look at whether the price breakout is supported by volume breakout as well. So in this case we can see declining wedge था, breakout मिला, उसी के साथ हमें volume spike भी था, and the price moved up, थोड़ा सा एक pullback rally मिला, and again you see the price started going down again. The price moved up here and then again it came down. I think somebody had asked me about retest. I think रवि जी ने मुझे retest के बारे में पूछा था. रवि जी आप देख रहे हो, ये मेरा एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस फिर से नीचे आया, थ्रो बैक दिया प्राइस ने. और आप देखो थ्रो बैक भी कौन सा लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, अभी वही वो सपोर्ट के तौर पर काम करके ऊपर चला गया. सो दिस लेवल इज माय रीटेस्ट लेवल. मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस था वो मेरा आगे जाके यहाँ पे सपोर्ट बन गया. सो द प्राइस रीटेस्टेड द प्रीवियस जोन एंड द प्राइस वेंट अप देयर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीटेस्ट. रवि जी, इज दैट पार्ट क्लियर? अदर्स
Is the declining wedge pattern clear, guys? Easy. So we have covered three patterns: diamond pattern, rising wedge pattern, and a declining wedge pattern here. Are these three patterns clear? If you all can let me know in the chat box if you all are with me. Great, Ankit ji is saying yes. What about others, guys? I hope you are able to आप चार्ट देके आप आई हो, आप समझ पा रहे हो कि ये पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. डोंट वरी, वील आल्सो हैव अ क्विज टुवर्ड्स द एंड. एक 5 to 10 मिनट्स का क्विज जहाँ पे मैं सिर्फ आपके सामने चार्ट रखूंगा एंड देन यू हैव टू look at the chart and see if you are able to spot the pattern or not because ideally लाइव सेशन में द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी क्या आपको उस समय में वो पैटर्न दिख रहा है कि नहीं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न्स. तो अब तक हमने जो भी पैटर्न्स देखे हैं, कैन आई से वी वर यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. एंड कैन आई से अब तक हमने जो भी तीन पैटर्न्स देखे हैं वो तीनों पैटर्न्स में हमने लाइंस का यूज किया हुआ है यहाँ पे. See, the different patterns has a different success rates. One Balangji, I think if I hope I have pronounced your name correct. So see, none of the patterns are 100% foolproof. I'll be absolutely honest with you. Go to this site name, thepatternSite.com, which is created by Thomas and Bulkowski. So what he has done is he had analyzed around 12,000 chart patterns over different time frames and over different market cycles. And he had listed down the success of each and every pattern. So for example, some patterns will have a higher success rate, while some patterns will have a lower success rate. If I get time towards the end, I'll show you that website as well. So don't worry on that part. Okay? Now coming to the next pattern is the rounding patterns. Now अब तक हमने जितने भी patterns देखे उसमें से हमने सिर्फ lines use किया था. Now what we are going to do is instead of using lines, now we are going to use curves. जैसे 180 डिग्री कर्व्स है, सो अभी लाइंस के साथ हम जब कर्व्स भी जोड़ देंगे तो हमें अब मिलेगा एक नया टाइप ऑफ पैटर्न जो कि होगा आपका राउंडिंग टॉप्स एंड राउंडिंग बॉटम्स. इसको सॉसर पैटर्न्स भी बोलते हैं, इसको बाउल पैटर्न्स भी बोलते हैं. अगर आपने हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस कप एंड हैंडल पैटर्न? Anyone has any clue about cup and handle patterns? I'm pretty sure you would, even if you don't know about it, आपने कहीं ना कहीं तो ये पैटर्न सुना ही होगा या कहीं देखा होगा आपने. So all these, bowl pattern, saucer pattern, rounding pattern. So basically it will, instead of using lines, we are going to use curves now. So how to do that? So the first pattern in that is a rounding top pattern. So there are two types of patterns, three patterns. एक आपका rounding top, एक आपका होता है rounding bottom. Rounding top means एक top reversal है. Rounding bottom means ये डाउन ट्रेंड के बाद एक बॉटम रिवर्सल है. एंड देन इसका एक वेरिएशन है, इसका एक एक्सटेंशन है विच इज कॉल्ड एज योर cup and handle. So we'll discuss the next three patterns. So the first pattern out of that is a rounding top pattern here. अब यूजुअली राउंडिंग टॉप पैटर्न्स कब दिखता है? राउंडिंग टॉप इज अ चार्ट पैटर्न that graphically forms the shape of an inverted U. मतलब अगर आप देखोगे हमने lines use नहीं किया है, but हम एक curves use कर रहे हैं अब. Now, how does this U को आप उल्टा कर दोगे तो आपको you will find it as an inverted U here. अब यूजुअली आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आई हैव टाटा स्टील हियर. यहाँ पे मैंने दूसरा टाइम फ्रेम लिया है. आई हैव यूज्ड अ 1 hour टाइम फ्रेम. सो हियर वी कैन सी टाटा स्टील एक प्रायर अप ट्रेंड पे था. फिर क्या हुआ, टाटा स्टील जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया है. नाउ डू यू नो व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज? सॉरी, anyone has any clue what is a distribution phase, guys? If you all can let me know in the chat box. So there are four phases of market cycles. There is a markup phase, there is an accumulation phase, then you have the markup phase,
फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एग्जैक्टली वोंट से सेलिंग जोन, बट एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता है. So this is what has happened with Tata Steel. Sorry, some issues with my throat here. So here you can see Tata Steel एक uptrend में है. So here you can see the price has made one high. Then there was one more high here. And after that, what has happened is the next high is lower than the previous high. And the next high is even lower than the previous high here. So you can see एक uptrend के बाद price एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस में चला गया है, वेयर पीपल आर क्वाइटली स्क्वायरिंग ऑफ देयर पोजीशंस. जैसे आपने निफ्टी में देखा था, जब निफ्टी ने एक हाई बनाया था सितंबर में, वो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना था. आई हैव द चार्ट विद यू एज वेल. So basically it indicates that now there is a lot of selling, buying that has happened, and there are chances that now people are being very cautious in this phase. इसमें आपका वॉलेटिलिटी भी देखोगे तो एकदम कम वॉलेटिलिटी होता है. देयर इज नॉट मच ऑफ प्राइस एक्शन योर, एकदम रेंज पे वो होता है यहाँ पे. यूजुअली दिस विल सजेस्ट अ रिवर्सल इन लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट, कि अगर एक ट्रेंड अप चल रहा है और आपको एक राउंडिंग टॉप मिला है, सो फॉर एग्जांपल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकडाउन. यू हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, एंड यू हैव टू, ये जो राउंडिंग का जो टॉप है उसका हाई, और ये जो आपका नेकलाइन है, सो दिस पार्ट, ये जो लो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज योर नेकलाइन. यू हैव टू टेक दैट डिस्टेंस एंड यू हैव टू सबट्रैक्ट इट हियर. तो अब जैसे ये ब्रेकडाउन मिलेगा, दिस इज वेयर योर मिनिमम टारगेट इज. Is the rounding top pattern clear, guys? If you all can let me know in the chat box. I think it's very simple to I think understand a rounding top pattern here, right? So basically what happens is you just have to look for an inverted U pattern where there is one high, then you have a higher high, but then the next high is lower than the previous one. So high, high and high. So I say U pattern. And usually we see that after an uptrend. And we have to wait for a breakdown. And आपको उसका target कैसे calculate करना है? You have to take the distance from this low to this high and just subtract it from this breakdown here, and this is how you will get your minimum target. Clear? And this you should be seeing after an uptrend. Now exactly opposite of rounding top is your rounding bottom pattern. Now rounding top में inverted U था, rounding pattern में आपका normal U है. Neckline is drawn with 3, yeah, ideally. So usually if you see ये जो low areas है, at least you need a minimum of 2 points. If you have more than 2, it is better initially, but ideally a minimum of 2 points is what you need to see. So that becomes your neckline. So that is basically the support. The moment that support breaks, that is when the breakout follows. Now जैसे rounding top था, उसका exactly opposite is rounding bottom. So here you can see I have Zomato's 1 hour chart. So here you can see Zomato was in a downtrend. So Zomato made a low, then it made one more low. So this low was lower than the previous low, but then Zomato recovered and this low was higher than the previous low here. So here you can see there is a clear rounding bottom, and here you can see there is this high, Rinesh ji, there is one high here. Again, if you see all these highs are basically, this will act as a resistance. So that resistance becomes your neckline. अगर आप देखोगे, एंड डिस्टेंस विल बी ये वाला जो लो है और ये जो नेकलाइन का जो जोन है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है आपको ये ब्रेकआउट पे ऐड करना है. दैट विल बी योर मिनिमम टारगेट. सो हियर वी कैन सी अगेन ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आके वही लेवल को रीटेस्ट किया. हियर यू कैन सी देयर वाज अ थ्रोबैक हियर. सो दिस लाइन व्हिच एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस अर्लियर, आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप. So if you see, फिर से आया, then you can see there was some indecision between the bulls and bears, and finally the bulls overpowered the sellers and the price started to go up from this level. Is the rounding bottom and the rounding top pattern clear, guys? If you all can let me know. So ideally कोई भी स्टॉक में अगर आपको कोई स्टॉक लग रहा है जो काफी ऊपर चला गया या वो काफी नीचे चला गया, ideally start looking for these rounding bottom patterns and your rounding tops.
बिकॉज एकदम ऊपर जाने के बाद अगर आपको एक राउंडिंग टॉप मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन दैट पीपल आर कॉशियस हियर, थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे चला गया एंड चांसेस आर कि अभी एक रिवर्सल आ सकता है. सिमिलरली आप देखोगे जोमैटो एक टाइम पे एकदम डाउन था एंड देन सम पॉजिटिव न्यूज आल्सो स्टार्टेड फ्लोइंग इन जोमैटो. That is when it formed a rounding bottom, and from there you see the trajectory of that stock changed here. So that was rounding top and rounding bottom. And one more extension of this is cup and handle pattern here. So now that you know what is a rounding top and what is a rounding bottom, so here you can see a cup and handle pattern on your screen. So this is your Fin Nifty ka daily chart. So I've taken an index here. Now, can anyone tell me what is the difference between a rounding bottom pattern and a cup and handle pattern? So आपको क्या करना है, आपको बस चार्ट देखना है. You already know how a rounding pattern looks like. Now just look at the chart and tell me आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न में और एक कप एंड हैंडल पैटर्न में. Let's see how many of you all can give me a right answer for this. So if you look at the cup and handle pattern, the cup is exactly similar to your rounding bottom. So for example, here you see there is this high, there is one low here, there is one low which is lower than the previous low. And then the price has recovered, then again it has made a low which is higher than the previous low here. So if you see, एक जो rounding bottom है वो तो एक cup है. So the cup part is your rounding bottom part. Now what happens after the cup is formed? So here you can see फिर से जो bottom से जो rise हुआ है ना, so this point is called as your lip. I mean technical terms में इसको lip बोलते हैं. So lip is the rise from the bottom, and post that lip rounding bottom में क्या होता था, जैसे ये breakout आके ऊपर चला जाता था, right? But what is happening in cup and handle is it comes to that point and again there is some small congestion area. Can you see this? मतलब एक राउंडिंग बॉटम बना के फिर से एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है आपको, where the price has come here. Ideally the price should have broken out from this level and it should have gone up, but the price doesn't break here. So the price is, again the buyers are slightly confused at this point. So here you can see there is a small congestion area that reverses downward for a short while, which is called the handle. मतलब यहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस देखो फिर से नीचे जाके और एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाता है. तो एक आपका एक बड़ा राउंडिंग बॉटम और एक छोटा सा कंजेशन एरिया विच इज लाइक एन हैंडल. तो अगर आप कप और हैंडल देखोगे, सो द हैंडल इज यूजुअली द स्मॉल पार्ट and the cup is usually the bigger part here. So ideally you have to connect the highs and the lows here, Rajesh ji. तो अगर आप देखोगे I've taken this high, I've taken this low and I've taken this high here. So if you go to trading view, you will find a tool which is called as ARC, ARC. So ARC में आपको क्या करना है, फर्स्ट हाई और सेकंड हाई में प्लेस करके वो जो मिडिल लाइन है आपको नीचे बस ड्रैग करना है. So that is how you can create an arc here. Correct? And then after that you will have a small, again another rounding bottom which is your handle part. And the moment it breaks out, yes, so how do you calculate the target, साधना जी? तो यहाँ पे ये जो लो है कप का, you take the distance between this low and ये जो neckline है उसका, ये वाला जो distance है वो distance को आपको breakout में add करना है, and that is how your minimum target would be. तो ये जो कप का जो लो है और ये जो neckline है, ये वाला जो distance है वो distance को लेके आपको ये breakout level पे add कर देना है. So this distance, your target would be equivalent to this point here. So add this distance to the breakout level and that is how you will get your. It's just that rounding bottom में rounding bottom होके breakout होता है, इसमें एक होके एक छोटा सा एक congestion area है, फिर जाके ये breakout देता है. That is the difference between rounding and your cup and handle pattern. Is this cup and handle pattern clear, guys? If you all can let me know in the chat box. So as of now, we have discussed 6 patterns: diamond pattern, rising wedge, declining wedge, rounding tops, rounding bottoms, and your cup and handle here. I hope आपको at least ये patterns में समझ में तो आ रहा है. I hope you all are not bored, guys. Also for the ones who are learning about patterns for the first time, I'm sure. See, how you can get expertise in these patterns is, आप जितना ज़्यादा patterns देखोगे, जितना ज़्यादा, see, one is you look at
you read books or you read articles, you look at patterns, आपको समझ में आएगा ये pattern कैसे draw करते हैं etc. But इसमें how you can get better at it is you need to train your eyes. I mean that is what I always say. आप जितना ज्यादा पैटर्न्स देखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लाइव मार्केट में ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो यू नीड टू जस्ट कीप ट्रेनिंग योर आईज टू लुक फॉर दीज पैटर्न्स. आई अंडरस्टैंड एक सेशन देखने के बाद ऐसा नहीं कि कल से आप तुरंत से पैटर्न आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे. You have to go through a lot of patterns every day. Maybe what you can do is whenever you get free time, just open any random chart of a stock. जो भी आपको स्टॉक पसंद है, जो भी इंडेक्स में करना है, स्टॉक में करना है, open any random chart, go to any time frame and see if you are able to find these patterns here. I mean, the more charts you see and the more you train your eyes, that is how you get better at these patterns. And it will take time. ऐसा नहीं कि एक दो दिन में expertise आएगा. It takes time. The more you see, the better you get at it. ठीक है, so that is your cup and handle pattern. Now let's come to the most famous and I think the most heard pattern, which is your head and shoulders top pattern. So जैसे एक top पे अगर बनता है, so that is head and shoulders top. अगर वही डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, वो है आपका head and shoulders bottom pattern. Now the example that I was telling you, remember September 2024 when Nifty made a high of 26,277 and उसके बाद से almost we are down 15%. I think last 2 दिन से थोड़ा सा एक रिलीफ रैली दिख रहा है निफ्टी में. But this is the head and shoulder pattern that I was talking about. So head and shoulder is slightly complex. क्यों complex है? Because यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइंस भी यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस भी यूज करना है और आपको राउंडिंग पैटर्न्स भी करना है. सो आइदर यू कैन मार्क हेड एंड शोल्डर ऐसे शार्प लाइन से आप मार्क कर सकते हो, या इसको आप कर्व से भी मार्क कर सकते हो. मतलब आपने ऐसे कर्व कर दिया, इसको ऐसे कर्व कर दिया, इसको ऐसे कर्व कर दिया. सो लाइक आई मेंशन्ड, इट इज अ सीरीज ऑफ 3 वेल डिफाइंड हाइज. या तो आप शार्प वे से इसको मार्क कर सकते हो, या आप इसको राउंडेड भी कर सकते हो. Now what happens in head and shoulder is basically like there are 2 shoulders and there is a head in between. So the best way for me to make you understand what an head and shoulder, so here you can see these 2 shoulders are lower than my head point. So similarly, ये मेरा एक shoulder है, my left shoulder, this is my right shoulder, both the shoulders, and then there is a head in between. So head is here at the top. So ये जो दोनों जो shoulder है वो नीचे ही आना चाहिए और एक head है जो ऊपर आना चाहिए. So this is shoulder, head, shoulder. And if you see this at the top, that is basically called as your head and shoulder pattern. So here you can see एक ऐसे shoulder होगा, फिर एक head point होगा. So this is your peak point, and then you will have a right shoulder. And obviously when you have these 2 points here, Rinesh ji, for example, exactly neckline कैसे होगा? ये जो low point है, that will be your neckline, and the moment it breaks out, so for example you have to take the distance between this neckline का low and ये जो head का जो high है, वहां से लेके जो neckline है, ये जो वाला जो पूरा distance है, वो आपको ये जो breakout level है वहां से subtract कर देना, and that is how you get your minimum target. आपने शायद देखा होगा लास्ट सितंबर में lot of people were sharing this head and shoulder pattern that is forming in Nifty, which was indicating weakness. And so this is a Nifty का daily chart है. So this head and shoulder was formed at that time. But guys, along with head and shoulder, are you able to look at one other pattern here? अगर आपने पिछले 6 पैटर्न में अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर आप हेड एंड शोल्डर तो ठीक है, देयर आर 2 shoulders and then there is one head in between which is your peak point. अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों शोल्डर्स का हाइट सेम होना चाहिए. अभी इसका थोड़ा हाइट बड़ा है, इसका थोड़ा कम है, तो दैट इज फाइन. इट्स नॉट दैट बोथ द शोल्डर शुड बी एट द सेम लेवल. थोड़ा ऐसा भी हो सकता है या ये शोल्डर्स ऐसा भी हो सकता है, दैट इज फाइन. बट एंश्योर दैट ये जो शोल्डर्स का हाई है, दैट शुड बी लोअर देन द हेड का हाई. नाउ अलोंग विद हेड एंड शोल्डर, is there any other pattern which you find very similar to head and shoulders? Let me know guys in the chat box. क्या लग रहा है आपको? ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है. आप देख रहे हो निफ्टी 50 का डेली चार्ट है. अप ट्रेंड के बाद एक शोल्डर बना, फिर एक हेड बना, फिर एक शोल्डर बना, फिर जैसे ही वो नेकलाइन से ब्रेकआउट हुआ, द प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउन. बट अगर आप देखोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हैज सम रेसेम्बलेंस और इट हैज सम सिमिलैरिटी टू वन चार्ट पैटर्न दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज दैट?
cup pattern, exactly, you can Arjun see, it can be an inverted cup and handle. कि अगर आपने मान लो, बिकॉज कप में क्या होगा ना, मतलब ये दिस विल बी योर कप, दिस विल बी योर हैंडल एंड दिस इज योर ब्रेकआउट ईयर. सो आइडियली इट्स योर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, बिकॉज कप एंड हैंडल डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखता है, बट अगर ऊपर किया तो दैट इज इन्वर्टेड कप एंड हैंडल. So yes, Arjun ji is saying a pattern, but can I say this is looking like a rounding top pattern, guys? क्या मैं बोल सकता हूँ एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी है? Because there is one high, there is one high, the third high is lower than the second high here. So if I do this, can I say this also becomes my rounding top pattern? So जब भी आपको एक राउंडिंग टॉप्स, राउंडिंग बॉटम्स दिखता है, simultaneously you can look for head and shoulder patterns as well. Is that part clear? Rinesh ji is saying yes. What about others, guys? This is my head and shoulders pattern. Clear? राउंडिंग टॉप साधना जी, बिकॉज ये अप ट्रेंड पे है तो ये राउंडिंग टॉप है. एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस, जैसे आपका, हाँ, इन्वर्टेड का परवीन जी, परफेक्ट. एंड जस्ट लाइक हाउ, अगर आप अप ट्रेंड के बाद अगर आप हेड एंड शोल्डर्स देखोगे तो दैट इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर्स टॉप. बट वही अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप देखोगे सो दैट इज हेड एंड शोल्डर्स बॉटम, और यू कैन कॉल इट एज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एज वेल. एग्जैक्टली सिमिलर, ये भी निफ्टी का डेली चार्ट है. प्राइस देखो डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, फिर एक so this there was one low, then second low is even lower than the first low, then the price recovered, then we had one low which is higher than the second low here. So या तो ये राउंडिंग बॉटम हो गया, या से अगर आप देखोगे कि लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये आपका हेड. सर आइडेंटिफाई कैसे कर, एक टुवर्ड्स द एंड ना यहाँ पे एक क्विज है गोपाल जी, मैं आपको ही पूछूंगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है. मैं आपके सामने सिर्फ एक चार्ट रखूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे आइडेंटिफाई होता है कि नहीं, वो आपका टेस्ट होगा. क्लियर? इज दिस हेड एंड शोल्डर्स बॉटम पार्ट क्लियर? एग्जैक्टली सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर्स टॉप. अप ट्रेंड में देखा तो हेड एंड शोल्डर्स टॉप, वही डाउन ट्रेंड में देखा तो हेड एंड शोल्डर्स बॉटम. दो शोल्डर होंगे, बीच में एक हेड होगा, द हेड, सो हेड पॉइंट इज योर लोएस्ट पॉइंट, और बाकी का जो लोज है दैट शुड बी हायर देन योर मिडिल पॉइंट योर. क्लियर? ग्रेट. Now I think another so two more patterns to go before we start with the quiz. How many of you all have heard about flag pattern, guys? मतलब अभी head and shoulder हमने देख लिया, very simple to understand, but there is something called as a flag and pole pattern as well. मतलब फ्लैग आपने देखा होगा, झंडा को कभी देखा होगा, सो देयर इज अ फ्लैग, और एक बहुत एक स्टीप, एक लंबा वाला पोल होता है, एंड देन देयर इज अ फ्लैग हियर. एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट, वो नाम भी ऐसे ही आया बिकॉज ये पैटर्न्स भी ऐसे ही दिखते हैं. सो हेड एंड शोल्डर इज ए शोल्डर, हेड, शोल्डर. Similarly, flag and pole, there is a pole and then there is a flag here. So if you are able to relate to that, up, see, if you have that pattern in your mind, then you know observation also becomes very easier. So अगर आप देखोगे पोल कैसा होता है, there will be a steep rise or there will be a steep fall. So अगर आप देखोगे flags, so here you can see this is Cochin Shipyard. एक टाइम में Cochin Shipyard एक ऐसा स्टॉक था, all the defense stocks, all these shipbuilding companies, they were all going up. Right now they are underperforming. But if you look at the historical chart, so here you can see Cochin Shipyard एक steep rise दिया. So this black line is your pole line. एंड एक स्टीप प्राइस के बाद क्या होता है, थोड़ा सा जो प्राइस है वो थोड़ा सा ब्रीदर लेता है, एंड देन यू कैन सी द प्राइस मूव्स इन अ चैनल. चैनल मतलब एक पैरेलल लाइंस में मूव करता है प्राइस, मतलब अप, sorry, down, up, down, up, down. So here you can see after a pole, मतलब after a steep rise, the price moves in a parallel channel. So this portion is called the flag, and this portion is called as the pole here. So this is your flag and pole. अभी आपको इसका how do you identify the target? ये जो pole का जो starting point है, you have to take that distance and you have to take the pole का जो highest point है. So this is the highest point for the pole and this is the lowest point of that pole. ये पूरा डिस्टेंस आपको, ये जब से ये ब्रेकआउट होता है, इफ इट इज सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम स्पाइक, इट इज इवन बेटर इफ यू टेक दैट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन. ये जो पोल का डिस्टेंस है, यू हैव टू टेक दैट एंड यू हैव टू ऐड इट टू द ब्रेकआउट लेवल, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर मिनिमम टारगेट.
सो एक स्टीप राइज होना चाहिए एंड देन पोल ब्रेकआउट, यही उल्टा देख लिया, सो दैट इज योर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल. Is the flag so flags are preceded by a steep sharp price trend. So this is what day जो price trend है वो एकदम steep है, एकदम sharp है, and then you can see the flags that moves in a parallel channel, फिर से breakout आके वो फिर से ऊपर जाने लगता है. Is the flag pattern clear, guys? If you can give me a heads up in the chat box. So one last pattern that is pending. So ये हो गया आपका flag and pole. Let me know before we move to the last slide here, guys. युवराज जी, अंकित जी, सोनिया जी, साधना जी, रिनेश जी, गोपाल जी है यहाँ पे. ग्रेट, सिंपल. I'll come to that part. Sonia ji, I have one example where I have multiple flag patterns. I'll come to that part. So I think one question I have to ask to Gopal ji, one question I have to ask to Sonia ji as well. Clear is, acha, am I, uh, guys, am I audible? I hope. Arvind ji, क्या हो गया sound? I hope I'm audible. ठीक है. And the last pattern for the day is the pennant pattern, guys. Now, pennant pattern is exactly similar to the flag pattern. Now, what I want you all to do is, अभी आपने flag pattern देख लिया है, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है pennant pattern. Now, who can tell me कि flag pattern में और pennant pattern में क्या difference है? Let's see how many of y'all can actually guess it. अगर आप देखोगे फ्लैग और पेनेंट में ना, दोनों इसमें ये जो आपका जो पोल वाला पार्ट है दैट इज वेरी सिमिलर. द पोल्स आर एक्सट्रीमली स्टीप. दैट्स ओके. गोपाल जी सेइंग फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. गोपाल जी फर्स्ट टाइम है, इसके लिए शायद आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है. द मोर यू लुक एट द पैटर्न्स द बेटर यू विल गेट ओवर टाइम. Okay, any difference that you find between a flag and a pennant pattern? Rinesh ji is saying narrowing flag. Okay, I'll take that because flag patterns में the price moves in a parallel channel. दोनों एक parallel lines के बीच move होते हैं. But pennant is slightly different. In what way? Exactly. I think Murthy ji has got it right. Rinesh ji, I'll take that answer as well. So can you see here? Instead of moving in a parallel line, the price moves in a symmetrical triangle. याद है हमने डायमंड पैटर्न में देखा था, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन नीचे और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऊपर, मतलब जहां पे प्राइस जाके कन्वर्ज होते हैं यहाँ पे. सो rather than moving in a parallel channel, so that is what I'm saying, the pennant pattern is the same as the flag except that the trend lines converge. फ्लैग में दोनों पैरेलल चैनल में जाते हैं, बट पेनेंट में क्या होता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक अपवर्ड स्लोपिंग. सो बेसिकली एक पोल के बाद अगर आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे वाला एंगल अगर आपको मिला और उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला, दैट इज बेसिकली योर पेनेंट पैटर्न. एंड द टारगेट इज द सेम. ये जो पोल का जो लो है और जो पोल का हाई है वो डिस्टेंस लेना है आपको, और ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको रख दे रहा है, एंड दैट इज हाउ यू गेट योर मिनिमम टारगेट. So that is your pennant pattern. Are these patterns clear, guys? I hope आपको so we are like 55 minutes into the session. Exactly, the lines are not parallel here, Sadhna ji. Exactly, so the lines are in a symmetrical triangle. Great. So 55 minutes. So now आपने patterns के बारे में तो देख लिया है, जान लिया है. I think now it's time that so I have 3 examples. So we have around 5-7 minutes left in the session. So now that you know all the diamond patterns, the flag patterns, wedge patterns, then we covered flag and pole pattern, pennant patterns. आपने देख भी लिया कि ये patterns दिखते कैसे हैं. Now let's see if you are able to identify with the help of a price chart. So
और ऐसा निराश मत हो ना अगर आपको आंसर्स गलत आए तो इट्स ओके रॉन्ग आंसर्स आर फाइन आई नो फॉर अ लॉट ऑफ आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो ऐसा मत समझना अरे यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ इट्स कंप्लीटली फाइन डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ just see if you are able to even if you understand at least 30-40% of whatever we discussed in the last 50-55 minutes it's fine chal so the first example is I have a chart of Reliance Industries it's a daily chart let me know what pattern do you see in this chart here so this is Reliance Industries daily chart. Okay, since this is the first example, I'll give you some hints here as well. So try finding a pattern in the center of the chart here. So this is Reliance Industries daily chart because आपको live market में ऐसे ही charts मिलेंगे. अभी ये वैसे रेडीमेड patterns तो आपको नहीं मिलेंगे live market में. Now see if you can identify any pattern here. I can identify two patterns. आई थिंक अभी आप बोलोगे सर आपने ही तो ये प्रेजेंटेशन बनाया आपको तो ये पैटर्न्स मालूम ही होगा नहीं ऐसा नहीं है बट अगर मैं ऐसे हाइंड साइड में ऐसे ही चार्ट भी देखूं तो मुझे यहाँ पे दो पैटर्न्स इमीडिएटली दिख रहे हैं यहाँ पे हेड एंड वाइड शोल्डर ओके रिनेश जी सिंह साधना जी वेबसाइट फॉर द पैटर्न साइट .com PHE pattern PATTERN SITE site.com the pattern site.com is the website head and shoulders yes very good guys I think inverted cup and handle I think I will give you, Sonia ji, I'll give you 7 points for that. Not really an invert cup and handle. Head and shoulders, yes. Guys, what about head and what about rounding tops? अगर आपने इसको head and shoulder बोला so this is your shoulder, this is your head, this is your shoulder and this is your neckline. So जैसे ये neckline breakout होता है the price has started to go down. अगर आपने हेड एंड शोल्डर्स बोला आई थिंक गोपाल जी यस आई थिंक गोपाल जी का फर्स्ट सेशन में आपने राइट जवाब दे दिया So, या तो आप इसको राउंडिंग टॉप बोलो या तो आप इसको हेड एंड शोल्डर्स इट इज आल्सो हेड एंड शोल्डर इज आल्सो द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ शोल्डर देन देयर इज अ हेड देन देयर इज अ शोल्डर अगेन अगर आप ये सारे लो पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो आपका एक ट्रेंड लाइन बनता है नेक लाइन यहाँ से आप ब्रेकआउट हो गया आप देखो रिलायंस तब से नीचे ही है यूजली मैंने बताया रिलायंस एक देखो एक अप ट्रेंड के बाद से देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेस और वहां से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया है ग्रेट गाइस सुपर्ब let's go to pattern number 2 I think sadhna ji had asked me a question sonia ji ने भी पूछा था यहाँ पे so this is the chart of Divi's laboratories Divi's lab it's a one day chart here यहाँ पे I can see a pattern here and I can see multiple patterns मतलब एक ही पैटर्न मुझे दो तीन बार दिख रहा है I think that is a hint that I can give you see if you are able to spot a pattern here it is one of the patterns that we learned कप एंड हैंडल नॉट रियली कप एंड हैंडल आपको कहाँ पे दिख रहा है नॉट रियली एकनाथ जी या दिस कैन वर्क ऑन 1 day 2 hours 4 hours 15 minutes any time frame doesn't matter कप एंड हैंडल नॉट रियली मूर्ति जी कहाँ पे आपको कप एंड हैंडल maybe I am not able to spot cup and handle now but I think ठीक है interesting अगर cup and handle yes Rinesh ji is saying flag Sonia ji is saying wedge pattern interesting but the pattern that I had covered here was can you see inverted I think Anand ji ने यहाँ पे inverted flag and bowl बताया था wedge at bottom this one you are saying this is where you are saying it's a wedge pattern downward sloping upward sloping not really because wedge mein the both the line should be going together ideally this is your series of small inverted flags yeah so here you can see there is a pole there is a flag again there is a pole there is a flag again there is a pole but this is not this is a parallel flag here downward diamond I don't think there is a diamond bottom here maybe I don't know if we can consider this as a rounding bottom
सी डायमंड में तो आपको ब्रॉडनिंग पैटर्न भी चाहिए और आपको सिमेट्रिकल भी चाहिए, बट इफ यू अगर आप देखोगे, आई थिंक इन्वर्टेड फ्लैग February 22, head and shoulders, February 22. This is where you are saying, not really Suraj ji, head and shoulders तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, but I think the most important is यहाँ पे जो see here you can clearly see there is a steep fall and then there is a flag. Again there is a steep fall and then there is a flag here. Again then there is a steep fall and then there is a flag. But यहाँ पे क्या होगा? We should not consider this as an inverted flag and pull. But yeah, nevertheless. बट ठीक है, राउंडिंग बॉटम आप शायद इस लेवल को बोल सकते हो, बट आई थिंक द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज मोर ऑफ एन इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल. दैट्स फाइन. Okay, one last example for the day, guys. CG Power. This is a weekly chart for CG Power. I think Gopal ji, this chart is for you. Others can also give your answers, but Gopal ji, क्या लगता है? Let me see how many of you all can spot this pattern. I think one pattern you can easily identify. Come on, guys. This is the last pattern for the day. I am hoping that you'd give me right answers for this. Sonia ji saying rounding top. Okay, I'll take that. Eknath ji saying rounding top. Perfect. CG Power का weekly chart है. This is somewhere around September 2024 जब हमने peak out किया था. Sonia ji saying head and shoulders as well. Very good. Superb. But where is the head and shoulders? That is the question. Gopal ji, are you able to identify head and shoulders here? आई थिंक आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि हेड एंड शोल्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे. कप एंड हैंडल. नो, आई डोंट सी अ कप एंड हैंडल हियर, गोपाल जी. Ideally there is no cup and handle, but I can see head November. Yeah, exactly. So here you can see आनंद जी, ये देखो. So this is what, so either you can call this, इसको आप एक राउंडिंग टॉप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे सोनिया जी ने बताया था. सतीश जी, इट्स नॉट राउंडिंग बॉटम, इट्स राउंडिंग टॉप. सो एकनाथ जी ने भी यहाँ पे बताया था. वेजेस ideally very difficult to find because wedge में, because I think it's a clear rounding top, guys. So here you can see एक head and shoulders है. So this is your head. So this is your high, then sorry, this is your shoulder, then this is your head, this is your shoulder again. अगर head and shoulders difficult लग रहा है, so this can be your rounding top. So this will be my neckline, और जैसे ये neckline break होता है, जो direction में break होता है उस direction में हम trade लेते हैं. Great, Arvind ji saying head and shoulder. Murthy ji, flag. No, it's not really a flag. I don't see is there any flag pattern. So flag pattern में एक parallel channel के पहले there should be a steep line. So ideally this is a head and shoulder pattern. Clear? Yeah. So that was it from my end, guys. I hope it was a good session. हमने अराउंड 9 पैटर्न्स डिस्कस किए हैं एंड हर एक पैटर्न को हमने एक एग्जाम्पल के तौर से समझा है. सो ये था आपका चार्ट पैटर्न्स पार्ट 2. सिमिलरली आप बाद में जाके इसको एसबीआई सिक्योरिटीज की यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आप वहाँ पे जो वीडियो सेक्शन है वहाँ पे सारे जो लाइव सेशंस है उसको आप फिर से रिविजिट कर सकते हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो. और वहां पे आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा. सो यू कैन गो टू एसबीआई सिक्योरिटीज वेबसाइट, यूट्यूब चैनल. वहां पे आपको चार्ट पैटर्न्स पार्ट 1, जैसे हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था वैसे मैंने पार्ट 1 भी डिस्कस किया है. सो आई होप यू गो एंड चेक दैट एज वेल, ताकि आपको ऑलमोस्ट 20 पैटर्न्स हमने कवर किए एंड यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट दीज पैटर्न, गाइस. एंड देयर इज वन वेबसाइट, सो let me see, thepatternSite.com. I think this is one website. So this is the website that I was referring to, Bulkowski's thepatternSite.com. So here you can see there are tons of patterns, guys. So here you can go and you can look at
chart patterns, market overview. So you can see chart patterns here. You click on chart patterns, you will see all different types of patterns, rising valleys. So there are so many patterns, more than 100 patterns here. And इसमें for example rounding top. So this is one pattern that we discovered now. एक rounding top pattern है. So how does this rounding top looks like? I think somebody was asking me about the success rate. तो यहाँ पे आप देख सकते हो throwback pullback का क्या success rate है, एवरेज राइज डिक्लाइन कितना होता है, ब्रेकआउट फेलियर होता है, सक्सेस होता है, उसका क्या परसेंटेज है, परसेंटेज मीटिंग प्राइस टारगेट्स का क्या है. सो यू कैन गो थ्रू दीज, गो टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन चेक कि हर एक पैटर्न का क्या इसका सक्सेस रेट है, क्या होता है ऐसे पैटर्न्स में. एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुली, मतलब अगर आपको चार्ट पैटर्न्स में मास्टरी करना है तो देर इज नो बेटर वेबसाइट देन दिस गाइस. एक एग्जांपल के तौर से ये पूरा कैसे इसका टारगेट्स कैलकुलेट करते हैं, सपोर्ट क्या होता है, देर आर सम एग्जांपल्स एज वेल. So I suggest you go to this site, which is by Tom Bulkowski. He's one of the finest traders and has written one of the finest books on chart patterns, guys. So this is the website for the people who are asking me for the website. And so you can go to SBI Securities. Let me see. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. So you go to YouTube and आप क्या कर सकते हो? You can go to SBI Securities. You can go to SBI Securities YouTube channel, and if you have not followed, you can hit the follow button. You can go to this live videos and you will see 2 हफ्ते पहले एक decoding chart patterns करके यहाँ पे मैंने एक webinar लिया था. So this was the part 1 of the webinar. ये जो अभी का चल रहा है, this is part 2. The part 1 was here where we spoke about ascending triangles, symmetrical triangles, descending triangle patterns and all. So you can visit our YouTube channel and you can see that. So I hope it was a good session, guys, and we'll have one more session next week. So next Wednesday को हम फिर से मिलेंगे 4 से 5 बजे, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम वेबिनार करने वाले हैं, जो होगा रेशियो चार्ट्स. सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे आप एक सेक्टोरल शिफ्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेशियो चार्ट्स. So don't forget to join that session, guys. So every Wednesday this month, all the Wednesdays, I'll be doing the webinars from 4 to 5. So I hope that you join me in those webinars. Rinesh ji saying very informative, more like this, please. Yeah, sure, Rinesh ji. Every week, we are planning to come up with one such webinar where, we can learn for an hour and it will be helpful to you. Okay, so that's all from my end, guys. So 2 more days left for this trading week. I hope you have a profitable trading sessions ahead. We'll have a session on harmonic patterns as well, Murthy ji. Crab patterns, shark patterns, ABCD patterns, cipher patterns. So we'll have webinars on harmonic patterns as well. So don't worry on that part. Okay, so that's all from my end. Bye, guys. Take care and see you all next Wednesday at 4 o'clock. That's all from my end. See you guys soon. Take care, guys. Stay safe.